Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the second part of the Labor Laws Industrial Disputes Act 1947. So this is a series that we have launched exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, wherein we'll be covering 15 MCQs a day. So why is this so important? See, kindly understand that we are expecting the notification of UPSC EPFO very soon. So for that, this would be helpful for all those who have been preparing for this exam. And not only that, when we talk about these topics that we have exclusively selected for this series, these would be helpful for your UPSC EPFO exam, that APFC पोस्ट एंड ऑल्सो फॉर AO और EO पोस्ट. सो दोनों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. एंड मोर ओवर ये ऐसा टॉपिक है जहां से एटलीस्ट मिनिमम 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं 120 क्वेश्चंस में इस एग्जाम के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए. सो ऑब्वियसली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दैट इज स्कोरिंग टॉपिक है. एंड वंस यू प्रैक्टिस, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट भी है. सो आई एक्सपेक्ट जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ यू कैन यूटिलाइज दीज सेशंस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन फुल प्रूफ. क्योंकि पूरा हम लोग हर एक एक्ट और लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हर एक एक्ट या लॉ जो भी है बहुत एक्सक्लूसिवली हम लोग पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs, सो दैट आपका प्रिपरेशन मतलब प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाए एंड एक बार पूरा रिविजन भी हो जाए. So friends, here comes the first question. Now there is a statement. मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी एंड आफ्टर दैट जो ऑप्शंस दिया है उसमें कौन सा करेक्ट इस स्टेटमेंट के साथ बैठेगा आपको ये मुझे बताना पड़ेगा. सो हियर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ये आता है एज पर सेक्शन 10. ओके, सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. इट प्रोवाइड्स अ वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन. मतलब बीच में ही एक a person, middleman type, he or she will be able to resolve the dispute. Now, which of the following statements regarding the voluntary reference of disputes to arbitration is or are correct? ठीक है, एक एक हम लोग अभी ऑप्शन पढ़ के देखेंगे. The arbitration agreement can be made only after the dispute has been formally referred to a labor court, tribunal or a national tribunal. No, even before that this can be done. 2. The arbitration agreement must be in writing and a copy of the agreement must be followed to the appropriate government and the conciliation officer. Yes, this is true until unless it is in written. Written में नहीं होगा तो ये इसको मानेंगे नहीं. So this is true. The appropriate government cannot prohibit the continuation of the ongoing strike or lockout related to dispute after the reference is made to arbitration. No, they have every right and every क्या बोलते हैं, उनको एक हक है to do that. So this is false. The arbitrator or arbitrators can be appointed by the appropriate government without the consent of the parties. That cannot happen. दोनों को consent से ही हो, क्योंकि that person has to deal with both the parties and उन दोनों को एक solution की तरफ ले जाना है. So obviously that person should be of मतलब दोनों की तरफ से ओके होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो ओनली ऑप्शन बी इज ट्रू. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding section 10B and 10C of the Industrial Disputes Act 1947. Which of the below statements is or are incorrect? Okay. First one, section 10B allows an employer and a representative union to submit present or future industrial disputes to arbitration through a written agreement, and this agreement is called as submission. And yes, this is very much true. जो हमने earlier देखा था that 10A में क्या है, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि किस तरह से उनके क्या क्या रूल्स है अगर आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, तो वो बेसिकली उसमें कवर्ड है. अब 10B एंड 10C में क्या है, उसमें क्या क्या नुआंसेस है और तो वो देखेंगे. सो यस, दिस इज ट्रू, वेरी मच ट्रू. बी क्या बोल रहा है, एवरी सबमिशन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग इट इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, वो होता है, दे हैव टू डू दैट. ओके, सो ये भी ट्रू है. एज पर सेक्शन 10C, ऑल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स फॉर द फ्यूचर डिस्प्यूट्स आर इररिवोकेबल. वो वापस भी ले सकते हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ऐसा नहीं है कुछ रीजन है ओके दैट कैन बी कैंसल्ड. यस, दैट इज ट्रू, बट एक उनको एक रीजन देना पड़ेगा. एंड
कैंसिल कर सकते हैं गिविंग अ 3 month रिटर्न नोटिस. एक 3 months का एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा टू द अदर पार्टी इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट, देयर बाय दे कैन डू दैट. बट अगेन पूरी तरह से ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट, सो दिस इज फॉल्स. सो 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. So moving on to our next question. Which of the following statements regarding the proceedings in arbitration under the Industrial Disputes Act 1947 is correct? ठीक है. अब इसमें क्या है, as per 10D and 10G, इसमें क्या है, when we talk about the arbitration, वो आर्बिट्रेशन जो भी होगा कैसे अपॉइंटमेंट होगा एंड ऑल दैट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी हमने देखा था इन प्रीवियस सेक्शंस, बट वो मेजरली फॉलो करता है बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, उसी के बेसिस पे होता है. एंड द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल दैट शैल हैव द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय ए सिविल कोर्ट. ओके, तो वो पूरा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में जो भी नुआंसेस है उसके बेसिस पे रहता है. एंड अगर इफ देर इज नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इन एनी सबमिशन, जो सबमिशन किया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, और अगर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट भी नहीं हो पाया है, इन सच केसेस वो डिस्प्यूट स्टेट गवर्नमेंट referred, that would be referred by the state government for adjudication. जो आगे के प्रोसेस होगा that would be done by the industrial tribunal based on the, जैसे मैंने बताया है, based on the recommendation of the state government. ठीक है, so here the correct answer is D. So friends, coming to the next question. अभी तक हमने देखा है कि जैसे अगर कोई आर्बिट्रेटर है या फिर नहीं होने के चक्कर में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेफर कर सकता है इस पर्टिकुलर केस को टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन टू एन आर्बिट्रेटर्स अवार्ड, अगर है, इन केस है, नहीं है तो ठीक है, अगर है और उसने कुछ बताया भी है, मैंने रेजोल्यूशन भी दिखाया है, दैट इज व्हाट कॉल्ड अवार्ड. ओके, व्हेन what happens to arbitrators award, when state government refers an industrial dispute to the industrial tribunal for adjudication. So in this case, in such cases जहाँ पे भी होता है, then the arbitrators award जो भी होगा that stands cancelled, वो automatically वो cancel हो जाता है, and now the case is under the adjudication of the industrial tribunal. So here in this case C is the answer. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding the publication and commencement of the awards. जो भी award मिला है, मतलब जो भी उनको एक hearing मिला है, judgment मिला है, उसके basis पे under section 17 and 17A of the Industrial Disputes Act. Now which of the below statements is or are correct? Now सबसे पहले every award of a labor court, tribunal, national tribunal or arbitration must be published by the appropriate government within 30 days of receipt. Yes, this is true. इनको 30 days के अंदर उसको publish करना पड़ेगा, ठीक है. An award becomes enforceable immediately upon its publication in the official gazette. No, immediately नहीं होता है ये 30 days और 30 days इनको time मिलेगा वहाँ से, जब भी publish हुए वहाँ से enactment के लिए. So this is false. 3. The appropriate government or central government can prevent the enforceability of an award beyond 30 days on public grounds such as national economy or justice. Yes, this is also true. अगर कुछ है तो definitely they can go for this. Okay, true. Within 90 days of publication, the government can modify or reject the award and present it to the appropriate legislature. Yes, this is also true. Okay, अगर इसके बाद कोई date mention नहीं है तो obviously जो भी उसमें date, I mean जिस दिन से पब्लिश हुआ है वहां से 30 days के अंदर definitely that has to be implemented, that whatever the award that has been handed over. So for this, so 1, 3 and 4 ये तीनों correct है, so A is the correct answer. So moving on to our next question. This comes from the 17A section. So यहाँ पे एक statement है, based on that there are 4 options for you to choose. So that the Industrial Disputes Act 1947 provides the period of operation of settlements and awards. Which of the following statements regarding the period of operation of settlements and awards is or correct? Once a settlement या जो भी award उनको मिला है, okay, that comes into operation,
ओके, जो भी डेट उन्होंने एग्री किया है ऑफ दैट डिस्प्यूट। अगर कोई डेट नहीं दिया है, देन द डेट ऑन विच द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट दैट वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्योंकि एक बार एक अवार्ड मतलब एक सेटलमेंट या फिर अवार्ड जो भी रूल उनको बताया गया है दैट दे हैव टू फॉलो, सो फॉर दैट ऑल्सो दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट। ओके, सो एज पर दैट उस डेट्स के हिसाब से वो कर लेते हैं। So what a settlement comes into operation on the date on which the memorandum of settlement is signed by the parties and remains binding for a period of 1 year. This is false because this would be binding only for a period of 6 months. ओके, जब भी वो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो भी वो साइन करेंगे कि हम ये अवार्ड को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड वी विल इम्प्लीमेंट अपॉन इट बाय सो एंड सो डेट, वॉट एवर दैट दे हैव मेंशन्ड, सो अकॉर्डिंगली उसका लाइफ रहता है 6 months. सो दिस इज ये 1 year है, so this is false. An award remains in operation for a period of 1 year from the date on which it becomes enforceable, but the appropriate government can extend its operational period up to 3 years. Yes, this is true. ओके, जब भी एक अवार्ड रिमेन्स इन ऑपरेशन जो चल रहा है अगर 1 year से, सो फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स एनफोर्सेबल, जिस डेट से वो एनफोर्सेबल है, मतलब वो एग्रीमेंट में जो लिखा है डेट उसके हिसाब से वो एनफोर्सेबल होगा। तो जिस डेट से एनफोर्सेबल है 1 year तक वो लाइव रहेगा, चलता रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है एनफोर्स करने में, देन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है दैट कैन एक्सटेंड दैट फॉर 3 years एज वेल. सो दिस इज ट्रू. A settlement can be terminated by either parties giving 3 months notice. No, here 2 months notice ही देना पड़ेगा in writing. Okay, so this is false. D, none of the above, ये तो false है ही. So यहाँ पे हमने बोला which of the following statements is or are correct. So यहाँ पे B is the correct answer. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding Section 20 of the Industrial Disputes Act 1947 related to the commencement and conclusion of proceedings. Okay. Now, which of the below statements is or are correct? So, देखते हैं. Conciliation proceedings begin when the conciliation officer receives a strike or lockout notice under Section 22 or when a dispute is referred to a board. Yes, this is true because उसी तरह से process शुरू होता है. Conciliation proceedings conclude when a settlement is signed or the report of the conciliation officer is received by the appropriate government if no settlement is reached. Settlement हुआ तो ठीक है, conciliation officer के through है, अगर नहीं हुआ है तो that has to be reported. Okay, so yes, this is also true. Proceedings before a labor court, tribunal or national tribunal conclude once the award becomes enforceable. So obviously ये भी true है, वही तक ही होंगे proceedings. The initiation of conciliation proceedings automatically invalidates any references made to a labor court, tribunal or national tribunal. This is false क्योंकि जब तक वो enforceable नहीं होगा उनका जो भी बताया है और जो भी rule किया है, award दिया है, that will be invalid only. So here this is false. So 1, 2, 3, these three are the true statements when it comes to the Section 20 and Section 22 as per this question. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एंड ऑप्शन है. आपको कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट के साथ बहुत सही फिट बैठता है वो आपको बताना पड़ेगा. सो हियर गोस द क्वेश्चन. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 imposes certain restrictions on strikes and lockouts in public utility services. Which of the following statements regarding the prohibition of strikes and lockouts is or are correct? A workman in public utility service can go on strike without giving any notice to the employer. ये गलत है, एटलीस्ट 6 weeks का नोटिस इनको देना पड़ेगा. So this is false. An employer in a public utility service can lock out workmen without giving them notice if conciliation proceedings are pending. अगर conciliation proceedings pending है then at least 7 days का नोटिस तो उनको देना पड़ेगा. So this is also false. A workman in public utility service must give at least 6 weeks notice before going on strike and an employer must give similar notice before locking out workmen. And this is very much true. जो हमने already discuss किया है, दोनों तरफ से notice compulsory है at least 6 weeks का. The restrictions on strikes and lockouts do not apply during the pendency of conciliation proceedings. No, कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 7 days का उनको notice period देना पड़ेगा either strike या lockout के लिए even during the conciliation process. So here the correct answer is C. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding Section 23 of the Industrial Disputes Act 1947 related to the general prohibition of strikes and lockouts. Which of the below statements is or are correct?
सबसे पहले स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर बोर्ड एंड फॉर 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. दिस इज ट्रू. ओके, तब तक वो कर नहीं सकते कोई भी स्ट्राइक. During the pendency of arbitration proceedings and for 2 months after their conclusion, strikes or lockouts are prohibited. ये भी true है. Okay. And the strikes or lockouts are prohibited during any period when a settlement or award is in operation. So बिल्कुल नहीं कर सकते जब वो settlement या award जो टाइम पीरियड है कि उसको उनको इम्प्लीमेंट करना है या इन्फोर्सेबल होगा उस पीरियड पे दे कांट गो ऑन ए स्ट्राइक आउट. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन रेस्पॉन्स टू एन इलीगल लॉकआउट शैल ऑलवेज बी डीम्ड इलीगल. सी, a lockout declared in consequence of an illegal strike or a strike declared in consequence of an illegal lockdown shall not be deemed illegal, क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं. ओके, इलीगल तरीके से करे, सो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड इलीगल. वो उनका राइट दे आर एक्टिंग अपॉन कि उन्होंने गलत तरीके से लॉकआउट किया तो हम स्ट्राइक करेंगे. इन्होंने गलत जैसे कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने गलत तरीके से लॉकआउट किया है तो यूनियन स्ट्राइक कर सकता है, दैट इज एम्प्लॉय स्ट्राइक कर सकते हैं. अगर एम्प्लॉयज गलत तरीके से स्ट्राइक किए तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को लॉकडाउन लगाने का चांस है एंड दैट इन बोथ केसेस वो इलीगल नहीं होगा, लीगल ही होगा, क्योंकि एक पार्टीज एक दूसरे के जो एग्रीमेंट किया है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं. ठीक है. Moving on to our next question, statement. Again, statement based question. I'll be giving you a statement and based on the options you have to give me the answer. So, statement. The Industrial Disputes Act 1947 provides for compensation to workmen laid off by their employers. Okay. Now, which of the following statements regarding the right of workmen laid off for compensation is or are correct? Okay, so here the statement goes like this: a workman with less than 1 year of continuous service is entitled to compensation for layoff. No, this is not true, क्योंकि at least 12 months उनको complete करना पड़ेगा वहाँ पे. So this is false. The compensation for layoffs equivalent to 75% of the combined basic wages and dearness allowance. No, this is false. ये 75% नहीं है. If a workman experiences a total layoff exceeding 45 days within a 12-month period, compensation must be paid. No, ये भी false है. Only after 12-month period it would be applicable. The same thing would be applicable. A workman is entitled to compensation for layoff at the rate of 50% of the combined basic wages and dearness allowance except for intervening weekly holidays. And yes, this is very much true in this case. So D is the correct answer here. Moving on to the next question. Consider the following statements regarding Section 25E and Section 25F of the Industrial Disputes Act 1947. Which of the below statements is or are correct? So, a workman laid off is not entitled to compensation if they refuse alternative employment offered in the same establishment. अगर मिल रहा है alternative employment, then he or she will not be entitled for the compensation. So, this is very much true. A workman who has not worked continuously for at least 1 year with the employer is not eligible for retrenchment compensation under the act. Obviously इससे पहले भी हमने देखा है अगर compensation या फिर जब laid off हुआ है या फिर कुछ काम नहीं है, whatever cases, if the person is being removed from his or her services, so definitely वो at least 1 year वहाँ पे काम करना चाहिए. So this is true. At least a year they should be working. Retrenchment compensation includes an amount equal to 15 days of average pay for each completed year of continuous service, जितने साल भी किया है, and any part thereof जो exceeding 6 months. So this is very much true. Okay. Now last, a strike in another part of the establishment does not affect the entitlement of laid off workmen to compensation. This is false, क्योंकि वो effect रहता है, क्योंकि अगर कहीं उसी इसमें establishment में दूसरे part में अगर कुछ strike हो रहा है उसकी वजह से production पे तो impact पड़ेगा. अगर production पे impact पड़ेगा तो obviously the employer will not be able to make that much money that he or she used to make. So obviously that would कंपेंसेशन के ऊपर पेमेंट, टाइमली पेमेंट यहाँ दिए हैं दैट दे हैव टू पे विद इन दिस टाइम लाइन्स, वो नहीं हो पाएगा. राइट. सो यस, दिस इज ट्रू, इट अफेक्ट्स द एंटाइटलमेंट. सो उनको वहाँ वेट करना पड़ेगा अपने कंपेंसेशन रिसीव करने के लिए. सो हियर ओनली 1, 2 and 3 आर ट्रू हियर.
सो यहाँ पे एक अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन विच कौन सा ऑप्शन सही है उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा. The special provisions relating to layoff, retrenchment and closure under Chapter 5B of the Industrial Disputes Act apply to industrial establishment that meet certain criteria. वो कौन सा criteria है? Based on that, you have to tell me. The provisions apply to all industrial establishments regardless of the number of workmen employed. नहीं, based on certain number only ये applicable रहेगा. So this is false. The provision applies to industrial establishments with 50 or more workmen employed on an average per working day for the preceding 12 months. No, ये भी गलत है. Okay, the provisions apply to industrial establishment with 100 or more workmen employed on an average per working day for the preceding 12 months, excluding seasonal and intermittent establishments. This is very much true. इसी के basis पे ये सारे applicable होंगे provisions relating to layoff. क्योंकि अभी तक हमने देखा है ले ऑफ में क्या किस तरह से उनको कंपेंसेट करना है, क्या टाइमलाइंस एंड एवरीथिंग वी हैव सीन. अब कौन से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे ये एप्लीकेबल रहेगा, इन दिस वी आर डूइंग. द प्रोविजंस अप्लाइड ओनली टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन द पब्लिक सेक्टर. नो, दिस इज फॉल्स. दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दोस वेयर 100 or more workmen are employed in the preceding 12 months, excluding seasonal and intermittent establishments. Moving on to our next question. With reference to section 25M of the Industrial Dispute Act, जो पढ़ता है chapter 5B में, consider the following statements. Which of the below statements is or are correct? So पहला statement है, an employer cannot lay off workmen listed on the muster rolls of an individual establishment without prior permission from the appropriate government or its designated authority except for बदली और द कैजुअल वर्कमैन, बिकॉज वो टेम्पररी होते हैं. एंड दिस इज वेरी मच ट्रू. दे हैव टू टेक कंपल्सरी प्रायर परमिशन बिफोर इन लेइंग ऑफ. ठीक है. नाउ एंड विद इन 30 days दे हैव टू अप्लाई फॉर दिस. जब ले ऑफ का वर्क स्टार्ट होता है, the employer must within 30 days of the layoffs start, they have to apply in a specific manner to the appropriate for the appropriate permission to prolong the layoff. If the employer applies for the permission to continue a layoff and no decision is communicated, उन्होंने 30 days में अपना वो दे दिया है कि we are continuing with the layoff and all that, appropriate government के लिए for permission, and no decision is communicated within 60 days, the permission will be deemed granted. Yes, it is true. अगर 60 days के अंदर कोई भी response नहीं आया वहाँ से कि go ahead या no go ahead कुछ भी नहीं आया तो then they can go ahead with the decision of laying off, and this is very much true. Any layoff without obtaining prior permission or failing to apply to within the specified time, जो 1 month का मैंने बताया 30 days का, is considered illegal. Yes, it is illegal, and the affected workmen are entitled to full benefits as if the layoff has not occurred. So yes, this is true. अगर किया है उन्होंने तो definitely they can go ahead for the with the जो भी हायर अथॉरिटीज़ को वो कर सकते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर एंड देन द एंटायर, जो अब हमने देखा है कि किस तरह से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो उसको फॉलो कर सकते हैं. The decision of the appropriate government or authority on granting or denying layoff permission is final and cannot be reviewed. ये false है, क्योंकि अगर उनको लगा कि उन्होंने गलत डिसीजन दिया है या गलत परमिशन दिया तो डेफिनेटली द रिव्यू कैन बी डन, एंड द रिव्यू कैन बी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो उन्होंने पहले परमिशन दिया है, द एम्प्लॉयर और एनी वर्कमैन. ऐसा नहीं है कि किसी के पास राइट नहीं है. ऑल दीज दे हैव राइट. ओके, एंड वेयर अ रेफरेंस हैज बीन मेड टू ए ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल के पास गया है, इट शैल पास एन अवार्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेफरेंस. जब भी वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा ये रिव्यू के लिए, then from there within 30 days they have to pass an award. They can't keep it just like that. Okay, yes.
So here comes the next question. Under chapter 5 is the same chapter of the Industrial Disputes Act 1947, what are the conditions precedent to the retrenchment of workmen जिनको निकाल दिया गया है कोई भी रीजन की वजह से, डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर कुछ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या वॉट एवर माइट बी द रीजन, all that of workmen in an industrial establishment with 100 or more workmen, ये आता है सेक्शन 25N में. ठीक है. The employer must give 3 months notice in writing to the workmen and obtain prior permission from the appropriate government or specified authority, which shall be deemed granted if not communicated within 30 days. बाकी सब तो ठीक है, okay, but it's not within 30 days, it is within 60 days. ठीक है, तो ये false है. The employer must give 1 month's notice, यहाँ तो starting में ही गड़बड़ है, मतलब 3 months notice देना है, 1 month notice, this is false. The employer must give 3 months notice in writing to the workmen and obtain prior permission from the appropriate government or specified authority, which shall be deemed granted if not communicated within 60 days. This is true. जो अभी ले ऑफ का हमने देखा ना, सेम ऑलमोस्ट दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द रिट्रेंचमेंट एज वेल. द एम्प्लॉयर मस्ट गिव 6 months नोटिस इन राइटिंग, ये नहीं है, 3 months नोटिस काफी है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो हियर इन दिस केस सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to the next question. Under the Industrial Dispute Act 1947, what is the maximum penalty that can be imposed on a workman or an employer who initiates or carries an illegal strike? So in this case, imprisonment for up to 1 month and a fine of up to 50 rupees. A workman who initiates this will be awarded, and both दोनों भी कर सकते, मतलब जेल भी होगा एंड फाइन भी उनको भरना पड़ेगा. सो हियर यहाँ पे 300 रुपीज रॉन्ग, एम्प्लॉयर 1 month एंड नो, एंड एम्प्लॉयर हु इनिशिएट 6 months नो, इनका भी सेम है 1 month एंड 50 रुपीज.
Coming to the next question, under Section 33 of the Industrial Disputes Act 1947, what is the implication for an employer during the pendency of proceedings in respect of an industrial dispute? See, इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में मैं सेक्शन 33 के अंडर क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हुआ है उसके बेसिस पे जो प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं. The employer can take disciplinary action against any workman, including protected workmen, without any restrictions. This cannot be done. Now, who are these protected workmen? See, every company में industrial establishment में जहाँ पे registered trade union है और ये सारे जो वर्कमैन है उसमें रजिस्टर्ड मतलब जो मेंबर्स है उसमें एटलीस्ट मिनिमम 5% मिनिमम 1%, एटलीस्ट 1% प्रोटेक्टेड वर्कमैन होंगे ऑफ द टोटल वर्कमैन. वो कौन है? वो है जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल मेंबर्स, ओके, एंड या फिर उनके जो एग्जीक्यूटिव्स है यूनियन के, सो उनको वो हटान, उनके ऊपर कोई वो एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर हैपनिंग. ओके, एंड फॉर एवरी एस्टेब्लिशमेंट मिनिमम 5 प्रोटेक्टेड वर्कमैन होंगे और मैक्सिमम 100 प्रोटेक्टेड वर्कमैन होंगे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, सो ये हो गया हमारा. सो दिस इज नॉट डन. The employer can retrench or discharge any workman except protected workmen during the pendency of proceeding. This is also not true. क्योंकि they can't take up any such things, retrenchment or discharge any workman during that time period. Okay, the employer cannot take any action against any workman including non-protected workmen. ये भी false है. Okay, the employer cannot take any action against protected workmen but can take action against other workmen during the pendency of proceedings. Yes, this is true. So here the correct answer is D. So फ्रेंड्स, बिफोर वाइंडिंग अप एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि एडुटैप ने ऑलरेडी 3 तरह के डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल दोज who are targeting UPSC EPFO APFC and EO exam for the year 2025. Very soon the notification is about to be released. Okay, सो इसमें 3 कोर्सेज कौन से? एक तो मास्टर कोर्स है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग आउट, स्काउटिंग आउट फॉर वेरियस कोर्सेज की कहाँ पे पूरा उनको कंटेंट सही से मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, चैप्टर मीन हर चैप्टर का एक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट होगा. एंड यहाँ पे तो कुलदीप सर एवरी वीक एवरी थर्सडे आपसे मिलेंगे ऑनलाइन एंड he'll give पूरा आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप अपना प्रिपरेशन सही तरीके से फुलफिल कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट आपको इवेंट टेस्ट एग्जाम जो भी टेस्ट होंगे वो सारे भी इसमें मिल जाएंगे. ठीक है ना. दूसरा आता है टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें ऐसे बच्चे ये कोर्स ले सकते हैं जो ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशन चल रहा है लेकिन उनको कुछ एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स चाहिए, जैसे कि पॉलिटी हो गया, जैसे लेबर लॉस एंड IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कुछ अलग सा कंटेंट उनको चाहिए, एक्सक्लूसिवली बस वही कंटेंट चाहिए, बाकी उनके पास ऑलरेडी है. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज जो वो अपने आप को चेक कर सकते हैं वेयर दे स्टैंड एज पार्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन से, ये उनके लिए है. एंड थर्ड आता है एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी पूरा अपना प्रिपरेशन अपने तरीके से कंप्लीट किए हैं. नाउ दे आर लुकिंग आउट फॉर सम ऑप्शंस वेयर दे कैन गो फॉर सम टेस्ट मीन अपने आप को चेक करने के लिए फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दैट. ये उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. सो ये 3 तरह के जो कोर्सेस है हर तरीके के स्टूडेंट को कैटर करने के लिए एडुटैप ने लॉन्च किया है. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम मेंबर्स, एनी ऑफ द टीम मेंबर्स, एंड आप इन कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. Thank you very much friends. So hope you have liked this session. See you all with the next session very soon.